the bouncing prolongation, and the pausing technique. I sort of thought of bumping into real scenarios and recording myself to demonstrate those techniques to my participants. I thought of that. So when I jumped into the real scenarios with my camera on, uh, I I was a lot mindful of my secondary behaviors, which in return made me struggle a bit less. Like I could do bouncing, I could do prolongation in a more mindful state. Like I was not running away from stammering. I was not hiding my stammering to a large extent, I would say. So yeah, like when I had my camera on my face, I could be more aware of my secondary behaviors, which in return made me struggle a bit less, I would say. And I recorded those videos, like uh, asking a rickshaw wala or buying a ticket at the railway station. I I recorded those kind of scenarios for my participants so that I could demonstrate like what bouncing could look like. So in those scenarios, when I kept my camera on, I sort of struggled a bit less, I would say. Dhruv, Sorry, you're on mute. I'm on mute. I'm sorry. And I was just saying, yeah, that makes sense. What you were sharing, Sudhir. Yeah, दीपक दीपक जी आपको शेयर करनी है? सर मैं चाहता हूं कि पहले कोई अपना जो सेकेंडरी बिहेवियर है वो शेयर करे और फिर मैं बाद में करूंगा। सर आप माइक आपका। Sorry, I keep on going on mute. I think it's open. Hi, Naresh. Yeah, hi. Good morning. Good morning. हाँ, तो I mean, हम just basically like अभी हम एक check in round कर रहे हैं कि last week में क्या हुआ, MOOC के बारे में, anything else के बारे में, and also at the end of last Sunday's meeting, we picked one secondary behavior and one avoidance challenge. So like we're also checking in to see कि क्या हुआ when, if like you were observing a secondary behavior in the week at different moments कि yeah क्या हुआ, क्या महसूस किया जब आप वो observe कर रहे थे, and yeah, and also an update as well about the avoidance challenge. Did you do it? कैसे रहा, etc. So yeah, we are just doing kind of popcorn style. Whoever wants to share, आप unmute और share कर सकते हैं, or raise Yeah, so just I want to share one secondary behavior what I did. Yeah, as a choice that I will try to control my eye blinking, because while I go to in the most uncomfortable situation, uh, I used to blink my eyes. So in the last week, I tr- try to be conscious more on blinking eyes. When I was speaking, I was trying to control my eyes, and of course, I see the improvement in this. That when I was a little bit conscious about this thing, my eyes was not blinking much. Still it was there, but it was a little less. And yes, the this thing I have done. And apart from this, I have tr- tr- tried to expand my comfort zone. And I faced the situation where I used to avoid, like when before what was happening with me, that when
I am going to approach my patients or attendants, I used to skip some words or ch, 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 change the words. But this time, what I did that I really used that words what I expected to use. And yeah, so, sometimes I faced some issues, some more difficulties, but I felt better than before. So this thing I am doing. Yeah. So thank you so much. Power to you. Nice. तो हाँ काफी इंटरेस्टिंग है कि like I mean मैंने भी actually same experience share किया and सुनील ने भी कि like जब हम अपने secondary behavior को observe कर रहे थे तो वो secondary behavior कम कम हुआ तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है um, yes whoever wants to go next हाँ जी हाँ सर जब मैं कल अपना सेकेंडरी बिहेवियर के लिए जो अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब मैंने पहली बार ये फील किया कि मेरे सेकेंडरी बिहेवियर कौन कौन से हैं। तो कल मुझे पहली बार ऐसा ऐसा फील हुआ कि जब मैं किसी से कुछ कहता हूं या फिर किसी की बात सुनता हूं तो मेरी आंखें कंटिन्यू खुलती है बंद होती है। तो ये चीज मुझे कल पहली मतलब कल मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा फील हुआ कि हाँ मैं जब किसी से कुछ कहता हूं तो मेरी आंखें बंद हो जाती है। ये कल मुझे ऐसा फील हुआ। और कल एक एक तो मुझे ये चीज फील हुई और एक चीज मुझे और फील हुई कि जब मैं किसी से कम्युनिकेशन करता हूं तो मेरा ये वाला जो हिस्सा है ना जिसको हम वोकल कॉर्ड कहते हैं ये एकदम हार्ड हो जाता है। और मैं ये चाहता हूं कि कुछ मैं कहूं लेकिन ये जो हिस्सा है बिल्कुल यहाँ से एकदम ऐसा हो जाता है हार्ड हो जाता है कि मैं कुछ बोल नहीं पाता। तो सर ये मैंने कल ये चीज मैंने की थी नोटिस। थैंक यू सर। बढ़िया बढ़िया thank you जी thank you so much for sharing yeah awareness बहुत ही बड़ी बड़ी चीज है कि हम just aware हो जाए कि हम कैसे communicate कर रहे क्या कर रहे exact जी um, सर ये मैं कल कल मैंने ये पहली मतलब ये कल मैंने ये फर्स्ट टाइम इस चीज को मैंने उस अपने आप को जब मैंने उसमें कैमरे के सामने देखा ना hmm, तब ये चीज मुझे फील हुई कि मैं जब बोलता हूँ तो मेरी जो कंटिन्यू आंखें खुलती है बंद होती है। तो ये चीज मैंने कल की थी नोटिस। exactly Good बढ़िया morning. great thank you Good morning. good Good morning, Karthik. good morning Anil right हमसे बात कर रहे हैं maybe he's talking to somebody else okay good so we would whoever wants to share next you can share um Varun would you like to share next like a check-in Varun ji yes Yes, yes, sir. Hi, Dhruv. Good morning. मेरा जो सेकेंडरी बिहेवियर था वो ये था कि मैं हर एक सेंटेंस बहुत जल्दी जल्दी बोलने का ट्राई करता था। मतलब एक ही सांस में मैं अ, एक एक जो अपना जो पूरा जो सेंटेंस है वो मैं खत्म करने का ट्राई करता था। तो फिर इस वीक मैंने वो जो मेरी जो बोलने की स्पीड है उस पर मैंने काम किया और मेरी जो बोलने की स्पीड है वो मैंने स्लो डाउन की। और जो
अवॉइडेंस जो अपना अवॉइडेंस बिहेवियर था, वो मेरा ये था कि मैं अननोन और स्ट्रेंजर लोगों से मैं काफी कम बात करता था, या फिर बात ही नहीं करता था। तो फिर इस वीक मैंने मेरे जो सीनियर डॉक्टर है, तो उनसे भी मैंने अ, अ, अ- अच्छी खासी बात की। एंड जो सेकंड थिंग थी कि मैं कॉल पर मैं ज्यादा बात नहीं करता था। तो फिर इस वीक मैंने एक अननोन और अननोन और अननोन और स्ट्रेंजर कॉल एजेंसी को कॉल कॉल करके ये जो मेरा जो एक ये जो मेरा एक फियर था, वो मैंने वो मैंने टैकल किया। एंड मैंने एक ट्रैवल एजेंसी को कॉल करके उनसे मैंने जानकारी और इंफॉर्मेशन ली। नाइस, बढ़िया बढ़िया। आप कहाँ जा रहे हो? अभी अभी कॉल। या तो क्या बात है। एंड कैसे कैसे लगा आपको करने के बाद कि आप या चैलेंज कर रहे हैं अपने आप को, तो कैसे ये कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा। और धीरे धीरे कॉल पर बात करने का और अननोन लोगों से बात करने का कॉन्फिडेंस अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। नाइस, सही है सही है। तो हाँ, आई मीन लाइक अमित जी कहते हैं कि वो अभी भी हर रोज वॉलंटरी स्टैमरिंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक एक सिचुएशन में मेरे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लाइक किसी कॉफी शॉप में किसी किसी अननोन व्यक्ति के साथ। तो हाँ, लाइक ये आई थिंक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है। और मैंने भी काफ़ी ट्राई किया, एंड मुझे भी लाइक हर रोज करना है एक कॉल या किसी से बात करना, एंड जस्ट to keep on challenging yourself. and यस, and I think it's also important कि जब like जब हम फ्लुएंसी महसूस कर रहे हैं, तभी भी हम जारी रखें ये प्रैक्टिस, like voluntary stammering with a stranger, or just continuing to like expand our comfort zone to yeah, to go into stretch zone वगैरह। तो बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। गुड। तो अमित जी कॉल पे है, एंड इट्स 10 o'clock a.m. here, it's 11:30 p.m. there, so I know it's very late for him. um so if anybody else wants to also check in, that'll be great. So then he could, because he's here now, he can so basically, तो basically हमारा जो फॉर्मेट आज का है कि हम सब चेक इन कर रहे, और फिर अमित जी हमको लाइक लाइक गाइड गाइड करेंगे कि लाइक अभी हम इस इस जंक्चर पे, इस मकाम पे हम कैसे लाइक what are the next steps, हम अभी कैसे आगे जा सकते हैं from secondaries etc. तो I don't know, Amit ji, like what would you like to do, like keep doing check-in, or would you like to start now? No, I can get keep going and people can keep checking in, and maybe in terms of the comments people give, that could be part of the check-in. I'm also curious to know if anybody has any questions कि मैं आपसे स्पेसिफिकली ये भी जानना चाहता हूँ, जिन जिन लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं सेकेंडरी बिहेवियर से, जो स्ट्रगल बिहेवियर भी बुलाते हैं उसको, और अवॉइडेंस बिहेवियर से, उसकी क्या लगता है आपको कि उसकी ये जानना जो है, वी टॉकिंग लॉट अबाउट अवेयरनेस, लेकिन जानना क्यों ज़रूरी है? इन टास्क में क्या वैल्यू है? इन टास्क का क्या मकसद, क्या है, पॉइंट क्या है? और ये जानना इम्पोर्टेंट क्यों है? एक तो बात अभी मैंने सुनी आप लोगों से कि आपने बोला कि जानने से ही, अवेयरनेस से ही थोड़ा सा चेंज आ जाता है. We're not trying for change, but just getting aware makes us a little bit struggle a little bit less. So okay, maybe that's one of the advantages. लेकिन उसके अलावा um, because अगर हम
इफ यू सी वैल्यू इन द टास्क, अगर हम टास्क की जो वैल्यू जो है वो बता सकें अपने आप को, तो मुझको हमारी जो सोच है, हमारी जो समझ है वो ज़्यादा बढ़ेगी। तो दैट 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 विल बी यूजफुल। तो थोड़ा बात कर लेते हैं, अगर कोई शेयर करना चाहता है कि इन टास्क की वैल्यू क्या है। क्या लगा आपको? I जी। think we have to point them out by दीपक। name. Maybe we have to ask नहीं नहीं, Naresh, what do you think? नहीं, दीपक ने अभी एक्चुअली ही रेज्ड हिज हैंड, तो अब बताइए दीपक। हाँ सर। तो सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जैसे पिछले 2 वीक से मैं आप लोगों के साथ में हूँ जी। तो इतने साल तक मैं जो अपनी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा था, तो मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि मैं ठीक हो पाऊंगा। हम्म। लेकिन मैं आप लोगों के साथ में आया, तब कुछ चीजें मेरे सामने आई कि जो सेकेंडरी बिहेवियर्स क्या होते हैं, और अब अवॉइडेंस बिहेवियर क्या होते हैं। तब मुझे वास्तव में ये चीज मेरे सामने है कि मुझे प्रॉब्लम क्या क्या है। जब मैं किसी से फेस टू फेस ऐसे बातचीत करता हूं, तब मुझे मेरे शरीर में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो जब तक मैं उन हम्म। चेंजेस के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करूंगा, तब तक मैं उस प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश भी नहीं करूंगा। तो अभी जैसे एक मेरा जो सेकेंडरी बिहेवियर है, जब मैं किसी से फेस टू फेस बातचीत करता हूं, तब मेरी जो आंखें हैं वो कंटिन्यू खुलती है और बंद होती है। तो जब तक मैं इस चीज को जब तक मैं इस चीज के ऊपर फोकस करने की कोशिश नहीं करूंगा, तब तक ये प्रॉब्लम ठीक नहीं ये प्रॉब्लम ठीक न, न, नहीं हो सकती। तो इसलिए हमें ये जो सेकेंडरी बिहेवियर्स के ऊपर फोकस करने से पहले हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम क्या है। तो जब तक हमको उस प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं चलेगा, तब तक हम उस प्रॉब्लम के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे। जी सर। ओके, थैंक यू। हाँ, तो आपने आप जो हैं, आप अवेयरनेस जो है इसको चेंज के ऊपर लिंक कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हम अवेयर नहीं होंगे, अगर हम कोई थोड़े से चेंजेस करना चाहें इनमें, वो चेंजेस कहाँ से आएंगे जब हमको हाँ सर। मालूम ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। तो हम चेंज कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल जायज बात है ये, और इससे कोई आर्ग्यू कर नहीं सकता। सो दैट्स ग्रेट, एक्सीलेंट। और कोई? सो लिंकिंग एक्सेप्टेंस, लिंकिंग अवेयरनेस टू चेंज, क्योंकि चेंज जो है अवेयरनेस से पे आधारित है। ग्रेट। इसके अलावा और कोई रीजंस, और कोई वैल्यू? मैं एक शेयर कर सकता हूँ कि हमको काफ़ी टाइम लगता है कि मैं स्टैमरिंग जो है मुझको हो रही है। मतलब कि मैं, और जब हम अपनी स्टैमर को डिस्क्राइब भी करते हैं, बताते हैं उसके बारे में, तो ये भी बोलते हैं मैं अचानक ब्लॉक में चला गया।
जैसे कोई मुझको कोई खींच के कोई ब्लॉक में ले गया, कि तो ये पार्टली बात जायज है कि ब्लॉक में हम चले जाते हैं, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, थोड़ा सा फ्रेजाइल है, थोड़ा सा अनस्टेबल सिस्टम है हमारा, जैसे हम स्पीच प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन हम ब्लॉक में जाते भी हैं क्योंकि हम ब्लॉकिंग पैटर्न हमने सीख लिया है छुपाने के लिए। पार्ट ऑफ why that pattern develops is because of the avoidance. Partly it develops because there is a neural there is a glitch. The body has a inherent tendency to push through the effort, right? It's some combination of what's going on biologically and what's learned. लेकिन अगर हम जान लें, जैसे कि आपने, दीपक ने भी बताया कि ब्लिंकिंग जो है, आई ब्लिंकिंग जो करते हैं, जहाँ पे लरिंजल, यहाँ पे आपको बहुत टेंशन फील होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि क्योंकि अगर हम जान लें कि हमारी टेंशन यहाँ है, तो हम अकॉर्डिंगली अगर थोड़ी सी एडजस्टमेंट भी थोड़ा सा सीख लें उस जगह पे, चाहे वो पॉजिंग में एडजस्टमेंट हो, चाहे वो बाउंसिंग की एडजस्टमेंट हो, चाहे कोई किसी और तरह की वॉलंटरी स्टैमरिंग की एडजस्टमेंट हो, जो भी एडजस्टमेंट हो, अगर मोमेंट बाय मोमेंट अगर हम कभी कभी एक्सपेरिमेंट करना चाहें, तो हम एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कभी कभी। और एक्सपेरिमेंटेशन से क्या होगा कि हमें एक्सपीरियंस मिलेगा, डेटा मिलेगा कि हम और जाना चाहते हैं इस डायरेक्शन में और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और we can move accordingly. So टैमरिंग की मोमेंट के दो हिस्से हैं। एक तो हिस्सा है कि जो हमको होता है, एक एक हिस्सा है जो हम करते हैं। हमारा जो है कंट्रोल है करने पे, और जब तक हम जानेंगे नहीं हम क्या करते हैं, तो दूसरी तरह से वही चीज कैसे करेंगे। अगर मैं नहीं ज ज ज ज जान चाहूंगा कि मेरे कि जब मैं हकलाता हूं तो मैं अपने यहाँ पे मेरे जीभ जो है मेरे ऊपर तालू के ऊपर चिपके चिपक जाती है। अगर मैं ये नहीं जानूंगा तो मैं इस टाइप के मूवमेंट जो मैंने सीखी हैं, कि मैं टेंशन से धीरे धीरे निकल रहा हूँ, ये कैसे सीखूंगा मैं? Does that make sense? या Um, तो आई मीन, तो आप कह रहे बेसिकली, जो जब हम लाइक वो लाइक मोमेंट जो है, जो जब हम कंट्रोल लूज करते हैं, राइट, लाइक जब हम बात कर रहे हैं लाइक a loss of control that we feel, mhm, आप कह रहे हैं mhm, कि तो अभी हम उस मोमेंट में जब हम जा रहे हैं, हम लाइक हम रिएक्ट कर रहे हैं, mhm, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर रहे हैं, mhm, एंड वो रिएक्शंस हम सेकेंडरी बिहेवियर्स कह रहे हैं, या एस्केप mhm, बिहेवियर्स जो mhm. ऑल्सो कहते हैं ना, कि लाइक टू रिएक्ट टू दैट मोमेंट हम आई ब्लिंक कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं No, वगैरह। no, that is certainly a part of the moment, but it's not the entirety of the moment. It is definitely a part, the reactive, it's rhetorically, it is the reactive part of the moment. But there is also a biological impulse in the body to push through the effort, push through the glitch. हम्म So these are co-occurring forces that are happening. हम्म। So there is a neurological component that is creating the speech motor glitch, against which there's a tendency to push, but we are also pushing reactively, राइट। or rather proactively. We are preparing to get stuck, and therefore we know the body restores continuity through effort. So we are preparing to push. हाँ, ठीक है। So it's both things happening. राइट। सो एंड देन वो व्हाट यू आर सेइंग कि जब हम उस मोमेंट में जाते हैं अभी, तो हम रिएक्ट कर रहे हैं, राइट, Mhm. लाइक या, एंड देन तो आप कह रहे हैं कि what we can do is we can change our reaction, change our response,
to maybe be more controlled through it bouncing prolongation वगैरह. Yeah, to be more forward moving, to be less struggled, to be more efficient, effective with whatever we are trying to say, economical, whatever term you want to use. Yeah, definitely. All of those things. That's it for me. I want to just Yeah, discuss, sure. but yeah, whoever else wants to, कुछ question पूछना है? I'm sorry if that was too technical. I get a little carried away sometimes. It's almost midnight आपके लिए I तो. know. Don't worry. It's okay. I'm here and it's fun. Yeah. Anybody else wants to share? कोई शेयर करना चाहता है कि आपको क्या लगा कि इस इन टास्क जो आप लोगों ने किए पिछले हफ्ते, इनकी क्या वैल्यू है? ये समय जिम मैं कुछ शेयर करना चाहूंगा, क्या ना? Sure. Absolutely. Please go ahead. यस हमने जो लास्ट वीक में जो भी कुछ टास्क हम लोगों ने किए, उनसे हम सब लोगों को जो हमारा जो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, हमारा जो रूट कॉज है, वो हमें काफी हद तक हमारा जो रूट कॉज है वो हम लोग काफी हद तक जान पाए, और हमारा ये रूट कॉज जानकर हमें इस पर अभी काम करना है. दैट्स इट. So root cause आपने बोला, like what is underlying problem क्या है, underlying issues क्या है? Yeah, so that's what we're talking about कि sometimes underlying issues are क्योंकि हमने इतनी reactivity develop की हुई है अपनी यस stammering में कि उससे काफी संघर्ष आ गया है. अनिल जी? Yeah, I just had a question कि हम जब feared word पे secondary behaviors गिव अप करने की सोचते हैं या फिर गिव अप करते हैं, तो within that moment we feel a feeling of helplessness. It's like we are entirely vulnerable और एक helplessness की feeling आती है, and then we run helter skelter to get the word out. So so what's your take on that? Like feared word पे secondary behaviors completely give up करना या फिर like how should we approach giving up secondary behavior on feared words? That's a very good question. Let's talk about that. तो feared words का क्या मतलब आपके लिए, अनिल? Like feared words are those words like which we usually struggle to get out. Like we have our own feared words list made up within our mind. Yeah. Like some people like I'm talking about the syllables that we usually are not able to get out easily. Yeah. And we dread speaking sentences starting with those syllables. Yes. A very common experience. So yeah, what are you saying, Yeah. Dhruv? So Sunil, are you kind of like talking about like feared situations, maybe overall? No, I'm talking about feared situations and also speaking out feared words within those feared situations. Okay. Or anywhere you can say. Yeah.
because I mean, just to kind of ask you a question, like for example, in this meeting or in our SSG meeting, do you kind of like have the same fear on those same words, or is it more since like it's in your comfort zone now, you're more relaxed anyway, so those those words are not as fearful in comfort zone situations, but they become fearful in your stress zone or or fearful No, situation. not at all. Like those fear words are still the fear words in this meeting also, but the courage to speak out those fear words is more over here, compared to in those situations where there is such a lot of time pressure, and there are also risk of negative reactions from people. So in those situations, the fear to speak up, those fear words kind of uh, rises up exponentially. Yeah, yeah. Okay. Excellent questions, Anil. I think some of it is clarified with the question that Dhruv asked about the situations, because these feared words are actually a very big motivation for avoidance. क्योंकि हमारी बॉडी ने एक एक बेसिक सेंसरी लेवल के ऊपर जो है इन एसोसिएशन डेवलप कर ली है कि इन सिचुएशंस में, इन शब्दों में, इन सिलेबल्स में, इन साउंड्स में हमको प्रॉब्लम होती है। और ऑब्वियसली दैट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस, क्योंकि हमारा अनुभव रहा है कि इन शब्दों के ऊपर मैं हकलाया और ऑब्वियसली नेगेटिव इफेक्ट हुआ, कोई नेगेटिव आउटकम हुआ। Somebody said something, somebody laughed at us, somebody didn't give us a right time to finish, it wasn't the right interaction, जो भी है, there was a negative consequence. So that association got developed. तो हमने सीख लिया, जो फियर जो है हम सीख लिया, तो उसको ग्रेजुअली एक्सपोज करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दिस इज वेयर ध्रुव's question is very likely, quite relevant. When he asks, like, you don't fear those words in every situation, but in some situations. And you said, no, less in some situations, more in other situations. It's a level of fear. And you said you have the courage to say them out here in this situation, but not in another situation. So, one of the ways, one of the importance, one of the very tangible benefits of developing a hierarchy of who, who, which places, what people, and what topics, which includes words, feared words, are in my comfort zone, are in my stress zone, are in my stress zone is so important, because then you can practice saying those words with the communication partner that you recruit for those tasks. So let's say a good friend of yours is a communication partner that is in your comfort zone. Perhaps you can recruit him to have a 60-minute, 60-second conversation in which you're going to say something to him using those feared words, in which you're going to consciously include those fear words. Take it up a next level. Maybe do some voluntary stammering on those feared words. Maybe do some voluntary stammering on less feared words and then go to those feared words. Your body will learn a different association. But of course, it'll only learn it in your comfort zone. Because stammering is very variable, we're not able to transfer what we're learning in one zone automatically in another zone. So it's important to practice this regularly. Challenge yourself कि मेरे कंफर्ट जोन में 4 लोग हैं, 4 कम्युनिकेशन पार्टनर्स हैं, ये वाला कम्युनिकेशन पार्टनर सबसे आसान है, ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग है, थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग है, ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है, लेकिन ये सारे मेरे कंफर्ट जोन में है। Then I'll practice the same task with communication partner 2, with 3, 4, very systematically. So let your body learn different associations by going through a different experience. Hmm. And I think also specifically like Sunil like पूछा था कि how can we work on secondary behaviors? Yeah.
on feared words, he said, but then essentially the kind of the question overall is also, I think, how can we actually work, Yeah. right? Sunil? Yeah. So the one way to practice doing secondary behaviors or any behaviors differently is to think about them as being conscious things that we do versus automatic things that come out. So if we are doing conscious things like blinking our eyes or whatever, we can also like maybe just voluntarily stutter on those particular word. That way our body learns that we can actually stutter on those feared words without secondary behaviors. We're giving our body that experience. Light voluntary stammering or lighter voluntary stammering on feared words is a way to deassociate the connection between secondary behavior. There is a reason we push a lot on feared words, because the only way a body has learned in order to move through those feared words is by putting more effort. So whatever we do, the last thing we do, it gets reinforced. If I push, close my eyes, push, I'm going to keep doing that over and over again because the body has learned that that's the way to move forward. So it has to learn a different way of moving forward. And voluntary hammering is one reason, is one way in which you can get that practice any number of times you want to at any point in time. It's your speech, it's your mouth, somebody's ear. It's a very simple equation. Fantastic. So actually speaking about voluntary stammering, maybe हम सब like अभी like एक साथ practice कर सकते हैं, क्योंकि that's just fun, and we'll hear everybody's voice. तो हम सब unmute कर सकते हैं, and हम अपने अपने t-shirt का color एक choose करें if you have two or three, and then let's do some voluntary stammering on that color. ठीक है? So I'll count to three and unmute, and then हम सब कर सकते हैं. So 1, 2, 3. Pink. T-shirt Bright ब्लैक टी शर्ट, green color White. is t-shirt. Black. green. ब्लैक टी शर्ट. Amazing. I'm just going to open this quickly because we're talking about voluntary stammering, and we have this chart already made for us. Oh, what happened? कहाँ गया? Did it go? Can you? Okay, it's opening. Can you see this chart? आप सब लोग देख सकते हैं? तो actually अमित जी ने हमको No. ये चार्ट सिखाया था. देख 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 सकते हैं ना चार्ट को? Yeah, okay. So okay, bye Dr. Sachin. I think he's leaving. Yeah, milte. And we can. Okay, so let's just practice like we were just doing with voluntary stammering. It keeps going away. मुझे मालूम नहीं कि क्या हो रहा है. Anyway, ठीक है. तो let's start with high tension and then high frequency. ठीक है? So let's say a sentence like my t-shirt color is orange, and then if I'm doing high tension and high frequency means I'll stammer on every word, and high tension means there's going to be lots of tension like when I'm stammering. So for example, it could look like my t-shirt color is orange, right? I stammered on every word. There was high tension on every word. And try as well, like Amici was saying, to be conscious in the moment of like during every stammer, keep eye contact. If you want, you can smile and that kind of thing. ठीक है? Right? So high tension, high frequency. Let's do like my t-shirt color is blank, and we can all do it together since we yeah. So okay, so on three. 1, 2, 3. By My t-shirt My color T-shirt t-shirt is color is color is black. black.
light blue. किसने लाइट ब्लू बोला था? Someone said light blue, no? If you can show us your t-shirt color, come on the camera. So then, because I don't see any light blue here. Um, okay. Anyway, so that was like the high tension, high frequency. Let's not do high tension, low frequency. So every other word we can say. So for example, that could look like my t-shirt color is orange. So every other word I did like high tension. And Amaji, correct me as well, or like jump in if you want, like if I'm explaining it. No, you just, yeah, yeah, you can come up with any definition of what is high frequency, low frequency. Yeah, that is completely up to you. Awesome. Sure. So basically every other word, so my t-shirt color is blank, and every other word do high tension. And again, be conscious in the moment of stammering. If you want to exaggerate it, you can. Let's try to do really high tension. Okay? Really high tension, but um keep eye contact as well, and see if you can, just be aware of what's happening. Yeah, but maintain eye contact though. That's really important to kind of maintain your awareness. Okay, so yeah, high tension, every other word. My t-shirt color and blank. So start. 1, 2, 3. Let's start. My My t-shirt color is pink. My t-shirt color is light is red. green. Orange. Wonderful. And बाबू आप आपने बहुत ही like सही किया. And मैंने observe किया कि आपने like you like close your eyes also. हाँ सर, मैं यहाँ वो करते वक्त इस भी क्लोज रहा था सर। Exactly. तो like वो like automatically हुआ. जी सर, वो ऑटोमेटिकली हुआ था। Exactly. तो हाँ, I mean like हमारे जो सेकेंडरी बिहेवियर्स है वो इतना ऑटोमेटिक है कि वो just हो जाते हैं. See if, let's do it again. And see if you can keep your eyes open, or ओके just be aware when you're about to close your eyes. And it's okay if you close your eyes, no problem. कोई issue नहीं. ओके ओके Just be हाँ aware कि मैंने अभी अभी आके बंद किया. हाँ सर, ओके। तो मैं कहता हूँ, माई टी शर्ट कलर इज ब्लैक। Nice. कैसे था आपके लिए अभी? सर अभी क्या हूँ कि मैं क्योंकि मैं अपने आपको के ऊपर में कि मैं कि मैं कॉन्शियस कर रहा था कि मैं आ, आ, इस ब्लिंक को ना ना करूं बोल के। तो उस 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 समय क्या होता, ये ये जो ये जो मेरा फोकस था उस जो सारा फोकस मेरे आंखों के ऊपर था सर। ठीक है. हम्म। Um, let's all do it again. So should we do the whole spectrum, Amici? Should we also do like low tension, or like do Yeah, try let's try some light voluntary stammering that is frequent, as I'm doing right now. I did gentle repetitions every syllable of every other syllable. Just like that. Yeah. Amazing. So let's do this same sentence. My t-shirt color is, and then every word we can stammer, and this time with light tension. So like some light bouncing or repetitions on each word. So like Amici ने अभी demonstrate किया.
ठीक है? Every word light like bouncing. Okay, so we start. 1, 2, 3. Start. My My t-shirt t-shirt color color is is light light green. Wonderful. How was that? Did you feel less tense? Yes. Less struggle? Sir, yes, sir. Mm-hmm. All right. Let's not do it on every other word. Okay? Every other word, light bouncing. Okay? So 1, 2, 3, start. My Um, My 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 t-shirt and my is color color t-shirt is color is light green. Wonderful. So now, how can we connect this voluntary stammering practice with working on secondary behaviors? Dr. Amit. Should we practice every day? Should we do something different? Yeah. But I think it's would be, I mean, there's no one set formula that is the prescribed formula for everybody. I would just follow some basic guidelines to make sure one gets enough practice कि हमको इस टाइप की प्रैक्टिस मिले जो हमको लगे कि हमें कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि ये उस टास्क में हम आगे बढ़ना जा रहे हैं कि हमको वैल्यू मिल रही है, थोड़ा ईज महसूस हो रही है, कम स्ट्रगल महसूस हो रही है, जो भी हमको ठीक लगे वो प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन उसमें दो तीन चीजें रिकग्नाइज करना आई थिंक इम्पोर्टेंट है क्योंकि according to research, there are certain practices that are quite that are very optimized for this kind of work. और ये है कि हमको if we can do daily practice but with less intensity, तो maybe we can if we are working in a comfort zone, अगर हम comfort zone में काम कर रहे हैं तो communication partner के साथ हम थोड़ी सी voluntary stammering जो है डेली कर लें, उनको बता के कर लें कि मैं करने जा रहा हूँ, और दिस इज अ वेरी गुड वे टू एक्सप्लेन टू समबडी मैं हकलाता हूँ, मैं एक कोर्स ले रहा हूँ अपने हकलात के ऊपर काम करने के लिए। तो इस कोर्स में काम दिया गया है कि किसी कम्युनिकेशन पार्टनर के साथ में थोड़ा सा दूसरे ढंग से हकलाऊं, दूसरी तरह से हकलाऊं। इसलिए मैं आपके आपका 60 सेकंड ले रहा हूँ और 20 सेकंड ले रहा हूँ, और however long you want to have a conversation. और by that we're creating space. We're also advocating for ourselves. अपनी वकालत अपने लिए कैसे करते हैं वो भी हम सीख रहे हैं. It is also an act of self-advocacy. It is also an act of acceptance. So this kind of practice, जैसे कि हम टैमरिंग को आइसबर्ग की वैसे मानते हैं, ऊपर का हिस्सा है, नीचे का हिस्सा है, दिस काइंड ऑफ वर्क गेट्स एट द होल आइसबर्ग, क्योंकि हम ऊपर जो है अपनी टैमरिंग जो है उसको कम संघर्ष से अनुभव कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो है एट द सेम टाइम, एग्जैक्टली एट द सेम टाइम, we're also getting desensitized. We're also advocating. We're also resisting time pressure. We're also practicing acceptance. So it really gets at the whole iceberg. Oh, sorry. Yeah, so I said Badia, and I kind of put in the chat as well like a summary, but of course, like you were saying, it's not like a one size fits all, but this is one practice you could do every day, which is like voluntary stammering within your comfort zone, and basically
like with the communication partner that you've told them that okay, is conversation में मैं अभी voluntary stammering करूँगा. And this helps because it desensitizes our us to that moment of stammering because we're going into it consciously, coming out of it consciously, and also we're advocating for ourselves to What is it, Masuk Hindu? Yeah. huh, And it's also training the listener, right? We're also educating the listener on how to talk to us, how to engage with us, slightly different. And so I think it's this is a win-win. लेकिन इसको सीमित रखना, इस एक्टिविटी को सीमित रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको अपने आप को खुली छूट दे देंगे कि मैं कभी भी किसी के साथ भी कभी ये भी कर लूंगा या मे बी आज सुबह कर लूंगा, दैट इज नॉट that's not exactly a good way to sort of build momentum in the task. One way to build momentum in the task is to do a little bit every day. Choti behavior dose, small dose of behavior, but on a regular basis. So maybe once in the morning and once in the evening, or twice a day, or once a day, you decide for yourself what is possible. Start out small, but be regular with it. That is a good model for behavior change a lot of the times. Yeah. amazing. So it's already 10:40. We could maybe end at 11, so we still have 20 minutes. Mera ye, like we can open up the room to anybody who has not spoken yet, perhaps. There are a few people jo ab call pe hai. We've not heard your voice. So if you want, you can share like a check-in also ki kya chal raha hai. If you have any questions about what we talked about, you can also ask anything. So yeah, opening up the room to you. And just to name who that is if you want. So there's Jaya, Anil, Komal. I'd love to hear your voice also. I'll just mention again in case you didn't hear. So Komal ji, Anil ji, yeah, Jaya ji. If you want to share, you can. The floor is yeah. I have any questions or sharing? Hello, Dhruv sir. Good morning. I don't have anything to share with you. Just I have a doubt. What are the tasks for this week? So I can start work on that as well. Yeah, that's it. Thank you. Yeah, wonderful. Thank you. So, what was the last task that you completed? Secondary behavior list and the emotional health. So in that video, we have to make a video with our childhood memories. I Wonderful. have completed this last one task. Yeah. Amazing. So yeah, so then we can like you can move on to module 3. So like you've like completed now module 1, or I mean module 2. I'm sorry. I'm sharing my screen so we can all see it together. So yeah, you were kind of talking about this task, the module 2.2 and module 2.3 emotional health. So now yeah, you could move on to module 3, which is basically the like stammering interview. Yes, this is so yeah, so like we were saying, begin like in your comfort zone with a close friend or somebody who you feel comfortable with, and then like yeah, the instructions are here. Yes. Yeah.
I will check this module, Dhruv. Thank you. Okay, yeah, okay, thanks. Yeah, so like ideally, our goal for this week is to work on module 3. If you haven't already started it, begin working on it. And then if you can do one stammering interview or more, if you want to do one every day, you can. There's many examples here. And it can be as short as 3 minutes or it can be 11 minutes, right? So it's totally koi वैसी बात नहीं है. It can also be only audio. भी ठीक है. And then also in module 3.2 is just making a video on pausing, which means that in the video, try and pause regularly. And also in the videos, where it's just you talking, and of course, even in stammering interview, you can also smile, that kind of thing. ठीक है? Instructions here? Okay. हाँ. Yeah. And for those of you, so also our plan was to also, because some people have already completed 3.1, 3.2. We'd like to complete module 3 this week. So one other thing that we were going to talk on the call today was this one, module 3, which is block correction techniques. Yeah. I'm Amitji, would you like to kind of like talk about this? Yeah. How much time do we have at this point, through? Well, I mean, Because we got to leave. We have about 15 minutes for the meeting to end, right? we could go till 11:15 as well, so for half an hour more. Okay. We say 2-hour meetings normally, so we did, yeah, but it's up to you how Okay. much time you have also. So No, that's okay. I just wanted to know what the upper limit was so I can plan accordingly. So is there a particular thing you want me to weigh in on? well, The techniques? just like like if people like are working on this task this week, so kind of what should they know going into it? Is there anything that they should like should we do a practice now of a cancellation, of a pullout, you know? That's a very complicated topic. Let's do this. I have an idea. Let's talk for a minute on um, like I think it's useful to understand why these things are there in the first place. Yeah. Um, can we get people to weigh in a little bit as to what value is there in this task? I mean, we have a stammering interview listed as a desensitization task, but why do you think it's important? Why do you think it's useful? Why is pausing? What role does pausing have in being able to reduce struggle? I think these are some of the big topics that if we get a clearer sense about, I think we're more likely to kind of do them and see value in them, I feel. True. So stammering interview, we can start with that. Well, why? Yeah, let's start and chat for about 5 minutes. Anybody who wants to say कि why do you think कि ये जो format है stammering interview का क्या इसका क्या क्या फायदा है, इसका क्या point है? हाँ, can I say few words on stammering interview? Sure, let's go with Arun से start करते हैं, then we'll go to Deepak next because he also had his hand up. Yes, please go ahead, ओके Arun. जी सर। तो सर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम अपने इस टास्क के अंदर किसी का पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्फिडेंस का जो एक लेवल है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होता है। तो उससे जहां तक मे, 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 मेरा मानना है इसको करने से हमारा कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो इंक्रीज होगा। जी सर। अच्छा, तो एक तो है इसका कॉन्फिडेंस लेवल पे इम्पैक्ट होगा, एक केस होगा। गुड, लेट्स गो टू अरुण। ओके,
हेलो सर, अभी तक हमने जो भी प्रैक्टिस की है, हमने वो सब प्रैक्टिस हमारे कंफर्ट जोन में की थी सर। और ये जो स्टैमरिंग का जो इंटरव्यू था, ये एक हमारे लिए एक एक काफी एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी। तो फिर हम्म यहाँ पर हमें खुद को चेक करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिली कि हाँ, हम लोग स्ट्रेस हम लोग स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हमारी जो है हमारी स्टैमरिंग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और हमें जो टेक्निक सिखाए गए हैं, जो 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 चार टेक्निक हमें सिखाए गए हैं, वो हम लोग स्ट्रेसफुल सिचुएशन और कंडीशन में यूज कर सकते हैं क्या? ओके ओके यस। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट लेट्स गो टू नरेश आप म्यूट नरेश अभी मैंने अनम्यूट कर दिया है, आई थिंक। आई एम आई ऑडिबल? या ओके, तो जो स्टैमरिंग इंटरव्यू है उसका कहने के ये भी रीजन है कि हम अक्सर अपनी स्टैमरिंग के बारे में लोगों से बात करना नहीं चाहते हैं। तो जो स्टैमरिंग इंटरव्यू का जो फॉर्मेट है उसमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं बहुत सारे स्टैमरिंग के रिगार्डिंग है। तो एटलीस्ट भी हम अपनी स्टैमरिंग को डिस्क्लोज कर सके लोगों के सामने कि मैं हक इस कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं इसके बारे में बातचीत कर सकता हूँ स्टैमरिंग को। अगर कोई बोलता है कि क्या तुम हकलाते हो, तो मैं उनको खुल के बोल सकूं कि हाँ मैं हकलाता हूँ और उससे मुझे कोई दी दिक्कत नहीं है। आई थिंक दिस यस। ग्रेट थैंक यू तो आपने बताया कि बेसिकली किसी के साथ स्टैमरिंग इंटरव्यू जो है इट इज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्लोजर अपने अपनी स्टैमरिंग को डिस्क्लोज करने का ये एक और तरीका है वॉलेंटरी स्टैमरिंग भी अपनी अपनी स्टैमरिंग को डिस्क्लोज करने का एक और तरीका है ये स्टैमरिंग इंटरव्यू इज अनदर तरीका है अगर आप टीसा की टी शर्ट पहन के जाएं बस पे सड़क पे तो अपनी स्टैमरिंग को डिस्क्लोज करने का एक और तरीका है राइट दीज आर जस्ट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्क्लोजर और स्टैमरिंग इंटरव्यू जो है इज अ पर्टिकुलरली पावरफुल फॉर्म ऑफ डिस्क्लोजर क्योंकि हम अस्यूम करते हैं कई बार राइटफुली सो हमारे एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए हुए हैं कि इस अस्यूम करते हैं कि हमारा ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट से लिसनर जो है हमको टाइम नहीं देगा हमसे बात नहीं करना चाहेगा हमको जज करेगा हम पे हंसेगा तो ऑटोमेटिकली जब हमने अस्यूम कर लिया तो हम स्टैमरिंग के दिखाना नहीं चाहते बात नहीं करना चाहते वी वांट टू प्रिटेंड दैट इट डजंट एग्जिस्ट लेकिन जब हम स्टैमरिंग इंटरव्यू करते हैं किसी के साथ और वो हमसे जवाब देता है ठीक से जवाब देता है इनको राइट गिव्स अस द टाइम एंड एवरीथिंग एल्स तो हमारा एक्सपीरियंस चेंज हो रहा है अब हम स्टैमरिंग जो चीज़ अवॉइड करते थे सारी जिंदगी उसको हम अप्रोच कर रहे हैं avoidance is the opposite of approach voluntary stammering is approach behavior stammering interview is approach behavior disclosure is approach behavior avoidance reduction is approach behavior so it is another form of approach behavior
and we are doing it in a social context, और हम स्टैमरिंग के बारे में बात कर रहे हैं in a deep personal way, क्योंकि हम ये नहीं बोल रहे कि मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं हकलाता हूँ कि आप क्या समझते हैं. Okay, can say that at the beginning, but this is not about that. The question is much more neutral. These, it's not an emotionally loaded conversation. So, I mean, these are some of the main reasons. I'm speaking from a speech therapy standpoint. Stammering interview is very often incorporated in many speech therapy practices for all these reasons, but it's just as relevant here. Do you have a question? या तो हाय ध्रुव, मैं एक्चुअली मेरा नाइट शिफ्ट था, तो जब मेरा आपने नाम लिया होगा तो मैं उस टाइम सो गई थी आई थिंक, सो मेरी नींद नहीं हुई, तो इसलिए मेरी नींद नहीं हुई थी, तो मैं अभी एकदम से उठी हूँ। सो आप मेरे से कुछ पूछ रहे थे क्या? नहीं नहीं, लाइक जस्ट जस्ट लाइक आपको अगर अगर लाइक चेक चेक इन करनी है कि लाइक कैसे ओके ओके चल रहा है आपके लिए, या टास्क कैसे चल रहे हैं, आप कैसे हो लाइक ओवरऑल, लाइक इन टर्म्स ऑफ इस कोर्स के बारे में, या ओके कुछ भी शेयर कर सकते हैं। ओके। सो मेरा जो सेकेंडरी बिहेवियर है वो मैंने अभी जो वीडियोस बनाई हैं उनमें नोटिस किया है कि मेरा आइज ब्लिंक होता है बार बार। मैंने कभी ये नोटिस नहीं किया था कि मेरा आइज भी ब्लिंक होता है। वैसे मेरा सेकेंडरी बिहेवियर ज्यादा नहीं है मेरा, मैं अंदर ही अंदर ज्यादा स्ट्रगल करती हूँ, पर मेरा फेस से दिखता नहीं है कि मैं कर रही हूँ स्ट्रगल। सो मेरा ब्रीदिंग का बहुत मुझे प्रॉब्लम होता है जब मैं बात करती हूँ, और मेरा चेस्ट में हैवी हैवी सा फील होता है। सो उसके लिए मैं अभी ब्रीदिंग करती हूँ, डीप ब्रीदिंग, तो उससे मुझे काफी रिलैक्स मिलता है। और अवॉइडेंस बिहेवियर मेरा ऐसा है कि मैं ग्रुप सेटिंग्स में बात करना थोड़ा अवॉइड करती हूँ, और किसी न्यू पर्सन से मिलना अवॉइड करती हूँ। तो मैं अभी यही ट्राई कर रही हूँ कि मैं ग्रुप सेटिंग्स में जाके बैठूं और किसी न्यू पर्सन से मिलती रहूं। और वैसे मैं बाहर रहती हूँ, जॉब करती हूँ, तो मैं वैसे ही मेरा न्यू पर्सन से मिलना अभी होता ही रहता है। और मेरा अभी इसी वीक प्रेजेंटेशन भी था ऑफिस में, तो वो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि मैं थोड़ा बहुत उसको फेस करूं, तो एक वो न्यू एक्सपीरियंस भी था और जो अच्छा रहा। पर मुझे 10% ब्लॉकेजेस हुए थे उसमें, सो वो भी मैंने मैनेज कर लिया था। सो दिस इज माय थैंक यू। Great, yeah, thank you for sharing. And I think आपका mentor है विद्या ना, विद्या, जी जी जी, विद्या है। बढ़िया। तो हाँ, I mean like आपने आपने kind of ऑलरेडी एक चीज की है, which is basically आपने शेयर की कि इस वीक आप क्या करेंगे, वो सिचुएशन में आप अपने आप को आप चैलेंज कर सकते हैं। तो हम सब सोच सकते हैं कि इस वीक हम क्या करेंगे, कौन से कोर टास्क करेंगे। Definitely, if you've not done stammering interview yet, so please do that. Like we were just saying, उसका काफी benefit भी है जो अमित जी अभी अभी बता रहा था। And then also the pausing video also, 3.2 module 3.2. तो हाँ। ध्रुव, मेरा एक डाउट है कि जैसे 2.1 में 4 टेक्निक्स थी, उसमें पॉजिंग भी इंक्लूडेड था, तो ये पॉजिंग वही सेम है कि ये कुछ डिफरेंट पॉजिंग टेक्निक है 3.2 में जो भी है? नहीं तो आई मीन मैं लाइक एक लाइक जोक कहने वाला था कि लाइक ये पॉजिंग बहुत ही लंबा पॉज है और वो पॉज नहीं, तो बेसिकली सेम है, बट इन दिस वीडियो आप थोड़ा सा आप एग्जैजरेट कर सकते हैं इफ यू वांट द पॉजिंग, to and experiment with different types, different lengths of pausing, small pauses, long pauses वगैरह। So yeah, so it's the same thing, it's just ओके pause, ओके। same।
ओके, थैंक यू। आई थिंक ये टेक्निक मुझे ज्यादा काम करेगी, क्योंकि मैं आई थिंक बहुत कम पॉज लेती हूँ, बहुत फास्ट बोलती हूँ, तो मुझे तभी प्रॉब्लम होती है। और मैं अगर पॉज लेके लेके बोलूंगी तो मुझे कम प्रॉब्लम होगी। सो आई विल ट्राई टू डू डू दिस। थैंक यू। तो अभी गौरव भी है इस रूम में, क्योंकि ही लाइक पुट हिज कैमरा ऑन। तो कैसे हो गौरव? एंड क्या चल रहा है? लाइक अ चेक इन कोर टास्क कैसे चल रहा है? सेकेंडरी बिहेवियर्स के बारे में कुछ शेयर करनी है, कुछ भी? सर मैं अच्छा हूँ सर। सर थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मुझे टाइफाइड हो गया था। ओह, तो मैं ये मतलब जो कोर टास्क था मैंने उसको अभी तक मतलब अटेंड नहीं किया था। पर अभी कुछ मतलब तबीयत बेहतर हुई है, तो अब अटेंड करने की कोशिश करूंगा। बढ़िया। एंड आई थिंक सुनील आपका मेंटर है, तो आप काफी जी लाइक जी। अच्छे अच्छे हाथ में हैं। आई नो दैट। गुड गुड। ठीक है, बढ़िया। थैंक यू सर। Good. So we talked about stammering injuries, module 3.1. Talked about module 3.2, pausing. If anybody feels like, आप video देखे, आप block correction भी कर सकते हैं, which is module 3.3, the last module 3 का video. Yes. So question is, should we end the call now at 11? या कुछ और share या I can I can stay longer. अगर कुछ और किसी किसी को बात करनी है, शेयर करनी है। हाँ। Has anybody got any questions? या किसी कोई question है, कोई सवाल है, any doubt about anything? Anything at all? We're good. So okay, so what I was gonna say is हम chat में, if you want, हम लिख सकते हैं what we're going to be working on this week. Um, uh, you can think about your core tasks. Um, and if you want, you can also think about if there's a secondary behavior um, that you want to observe this week. Um, yeah. And also, I guess the third and last thing is if there's any avoidance challenge you want to give yourself. So think about it for a minute. So core tasks, क्या complete करेंगे? Yeah, this is like not binding, but you can say I'm gonna try to. मैं कोशिश करूँगा कि मैं ये core task attempt करूँगा. Um, and then second thing is secondary behavior. If there's one secondary behavior जो आपको जि, जिसके ऊपर आपको काम करना है, तो वो क्या होगा that you can observe this week. And then third is any avoidance challenge that you want to give yourself. So think about it, and then in the chat you can write. I'm going to be taking off, so I'll see you in some. Yeah, go ahead. Let's do a group photo before you leave. Oh, okay, sure, yeah. So if everybody who can just turn on your video for a second. We'll take a group photo. So yeah, if you can put your video on, we can see you. Then we'll do a nice photo. I'll also open my self view. Okay, so on three, we say Tisa. You can unmute if you want, and we'll say Tisa. Okay, so 1, 2, 3, Tisa. Peace. Okay, and now a block on Tisa. So a nice smile comes on the block. Ready? So 1, 2, 3, Tisa. Peace. Nice, guys. Good job. Good job. Okay.
Thank thank you so much, Amici, for joining. Um, and yeah, we'll see you soon. Good night. Great. So now, yeah, so in the chat, if you guys want to just yeah, write down like we were saying those three things, which core tasks आप काम करेंगे, like किस core task पे, which secondary behavior, if there's one secondary behavior you want to work on, what will that be? And third is the uh avoidance challenge. So you can write in the chat, and then this will be our assignments for ourselves. हम अभी खुद खुद को हम homework दे रहे हैं. That's the best way. So yeah. Any questions, please unmute and ask. And after you post in the chat, you can also unmute and share. Like you can read it if you want. But if you want. Uh, Varun, can you just like write the task down? Like it's same as last week, that's fine. Like लेकिन आप लिख सकते हैं कि क्या 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 task थे last week, and then it'll be good Okay, okay, just as a okay. yeah, so it's more No clear. problem. Hmm. Good. तो या अगर किसी को कुछ शेयर करनी है तो feel free. Varunji, okay, now, yeah, the last one, avoidance talk on call in stressful situations, like my senior job. Yes, right. Cool. And yeah, on secondary, like I think at this stage still, like, and just monitor it, just observe it. Okay, You're speaking fast, and just be aware कि ये हो रहा है. ठीक? okay. That might be enough because you are saying you'll work on your speaking speed, but in some ways just observing your speaking speed is enough to and then the work will happen because you will recognize and slow down. Yes, sure. Cool. Right, guys. So anybody else want to share anything? Yeah, floor is open. Hello, Dhruv ji. I just want to ask one question. I don't think it is right कि जैसे जो हमें टास्क मिला है और हम जो बोल रहे हैं तो जैसे हम
कुछ कहीं पे बात कर रहे हैं, तो क्या एक ही टाइम में ये सब चीजें करना पॉसिबल है कि हम अपना इमोशंस के साथ में बोल भी पाएंगे, हम टेक्निक को यूज भी कर पाएंगे, हम उसके साथ में सेकेंडरी बिहेवियर को कंट्रोल भी कर पाएंगे, और उसमें कहीं ना कहीं ये भी अपने मन में रहता है कि नहीं, सामने वाला थोड़ा बहुत हमारी बात से इम्प्रेस भी होना चाहिए। तो फॉर डू यू थिंक कि ये सब एक ही टाइम में करना पॉसिबल है? नहीं 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 नहीं, तो आई मीन मैंने जस्ट लाइक जब जब लाइक तो बेसिक या सो दैट्स अ गुड क्वेश्चन। तो ये जो सेकेंडरी बिहेवियर का जो जो हम लिख रहे हैं अभी, हम हम चूज कर सकते, like ideally observe yourself maybe three times in the day. If you want 2 or 3 times in the day, morning, afternoon, evening, you can set a time, and just for a few minutes, doesn't have to be the whole day कि मैं observe कर रहा हूँ अपने अपना secondary behavior. So choose consciously कि okay, मैं अभी इस conversation में नरेश के साथ मैं अभी ऑब्जर्व करूंगा कि मैं कितने बार like बोल रहा हूँ, because that's my task for this week. तो हाँ, तो choose a specific task. Yeah. And now your avoidance challenge जो हमने choose किया, that's separate. Right? In the avoidance challenge, anyway, that's going to be a stressful situation, right? So you don't have to, if you want, you can observe secondary behavior there also, but it'll be more difficult because you're anyway doing something stressful, right? So yeah, you like don't have to do it at the same time. The observing secondary behavior and the avoidance challenge. Avoidance challenge just is separate, and then you're also observing secondary behavior at different times during the day. And begin observing secondary behavior in your co comfort zone situations more. Because in comfort zone, you're more relaxed and you can actually observe then. In stressful situations, you're going to be under stress. So it'll be difficult. ठीक है? Does that make sense? And यस core यस task जो है, यस। हाँ, and core task जो है, that's anyway like like in some ways like a avoidance challenge. Like if you're choosing this stammering interview this week, like module 3.1, then that's anyway like an avoidance challenge. Um, yeah, yeah. And in the stammering interview, And one more question I have, really very smart. yeah, yeah. Yes, yeah, please tell. No. And in a stammering interview, it's not necessary to observe secondary behavior there. If you want to, you can. But again, it could be more stressful for you. So just focus on the interview. Focus on disclosing about stammering, talking about stammering openly. Yeah. Yeah, perfect. So I have one more question that is very small. कि जो वो वॉलेंट्री स्टैमरिंग है, उसमें क्या हमें एक्चुअली करना है? क्या हमें जस्ट जानबूझ करके ओनली स्टैमर करना है, या फिर उसमें हमारे सेकेंडरी बिहेवियर भी करना है जानबूझ करके, जो हम एक्चुअल जो रियल लाइफ में करते हैं? Yeah, that's a good question. तो एक तो basically आप basically like voluntary stammering in some way है कि हम अपने अपने हकलात से हम खेल रहे हैं and also जान रहे हैं। तो हाँ, I mean, तो basically आपने दो ऑप्शंस दिए हैं, like in one option like just vol- voluntary stammering with some control, जैसे like इस कॉल पे मैंने कहा कि keep your eyes open and smile and do voluntary stammering, right? So that's one way. And the second way is to copy your own stammering pattern, कि आपका secondary behavior है, अगर eyes close करना है तो आप वो करेंगे। तो हाँ, ये दोनों है। um, it's up to you, but yeah, you can do both. I would say just try both. Try kind of copying your own secondary behavior pattern in a conversation, and then also try doing conscious voluntary stammering. Well, I'm sorry, both are conscious voluntary stammering, but the second one where you're keeping your eyes open,
you're in some ways then modifying your secondary behavior, or you're stammering without secondary behaviors. So yeah, so experiment with both, and the goal again is to just, become, well, in the first one, is to kind of become aware of your secondary behaviors, because आप जानबूझ के secondary behaviors आप कर रहे हैं. And the second one, you are also increasing awareness of stammering without secondary behaviors. So in some ways, it's like a change process, and आप choose कर सकते हैं whichever one you feel like. But yeah, I think दोनों ऑप्शन सही है ना. I don't know. आ, आपका क्या राय है? आप तो काफी बार ये वॉलंटरी स्टैम्पिंग कर चुके हैं, तो आपको क्या लगता है? आई थिंक मुझे यही लगता है कि जो हमारी रियल स्टैमरिंग है, जो जो सेकेंडरी बिहेवियर के साथ में हम एज इट इज उसको कॉन्शियसली करें, जस्ट कि जो भी हम कर रहे हैं हमारी चेतना में रहना चाहिए कि नहीं, हाँ वो मैं कर रहा हूँ, जब मैं उसको चाहूँ तो मैं उसको रोक सकता हूँ, और उसको मैं जब चाहूँ तो स्टैमर कर सकता हूँ, पर लेकिन वो मेरे पूरे कंट्रोल नियंत्रण में रहना चाहिए. बट आई थिंक दिस इज आई फील फॉर मी. Yeah, fantastic. हाँ, I think वरुण ने हाथ ऊपर किया. Yes, sir. I yes, Dhruv. I I have one question, Dhruv. You, what are the what are the benefits of voluntary stammering? Hmm. Mm, That's my question. Yeah. Well, let me ask it back to you. What do you think could be the benefit of voluntary stammering? Or when you've done voluntary stammering, have you felt any benefit? Mm, mm, Actually, I I am trying to find the answer, but मुझे ऐसा कुछ अभी तक कुछ मिला नहीं. Okay. So let me ask a different way then. Yeah. So what what could be the benefit? Any just maybe one or two benefits that you think could be yeah. Mm, Voluntary voluntary stammering की वजह से हम लोग स्टैमरिंग को समझ सकते हैं शायद ये. Huh? और कुछ वगैरह ऐसा. आई डोंट नो. Yeah. Okay, fine. Yeah. So sorry. Just to kind of see if you know what could, yeah, the possibility. But हाँ तो like at least मेरे लिए जब मैं जानबूझ के मैं स्टैमरिंग करता हूँ, तो पहली चीज़ है ये कि मैं अपने आप को जो स्टैमरिंग का डर है, मैं उसको फेस कर रहा हूँ. And for us, at least for me, the biggest problem actually is the fear of stammering, right? So if I'm doing stammering on purpose, I am facing my fear. And if I do voluntary stammering every single day, then I'm facing my fear every day, which means the fear will keep getting lower of stammering. When I'm going into the moment of stammering, I like and with voluntary stammering, you're going into the moment of stammering consciously, voluntarily, by choice. So you're choosing to stammer, which means you're choosing to face your fear. So yeah, that's one big benefit is fear reduction. ओके. गॉट इट. And जो अभी नरेश कह रहा था, where he was saying कि
he does his secondary behaviors in the voluntary stammering. Like that's one of his practices. So for example, if my secondary behavior is to close my eyes and put my head down, I would मैं जानबूझ के वो कर सकता हूँ, like Dhruv. So I know, so because normally I go into a block unconsciously. I lose control, lose consciousness. So voluntary stammering, you're bringing back the consciousness. And then I can then experiment doing Dhruv with eye contact now. So I'm still stammering, but I'm consciously stammering or changing the way I'm stammering. And doing that in different situations. So comfort zone में fear like with so someone who's like slight fear, like on the phone with a stranger, and then maybe a colleague at work. So basically, I keep experimenting with showing my stammering, which is voluntary stammering, in different situations. And again, I think the goal ultimately is just reducing the fear of stammering and facing it. But yeah, but experiment. So just do some voluntary stammering in your actually, who was your mentor again? Vidya ji, Okay, Vidya Chashinkar. right. So in your weekly meeting, if you have a weekly meeting, do voluntary stammering in that meeting. On this call, we can do some voluntary stammering as well, like that. And just because yeah, keep approaching, keep trying, and then you'll understand the benefit yourself. I think Sunil, you were had your hand up. Yes, I raised my hand. I just wanted to share some things about voluntary stammering. Like Varun had asked that what is the benefit of voluntary stammering? Like voluntary stammering, in a very basic understanding, is a very counterintuitive approach to stammering. Like the most of the stammering that we know that we do. Um, uh, Comes from trying not to stammer. Like there is something within us which uh, uh, which pulls us away from the moment of stammering, and the friction that happens during that moment, that we know as stammering. Like most of the struggle that we know comes from trying not to stammer, and by voluntary stammering we consciously try to stammer, uh, giving ourselves the message that all those things that I'm trying to do not to stammer, uh, involuntarily, if I can do them voluntarily, I'm taking away the power of the struggle that is causing during the moment of stammering. And also I just recently found out that like some secondary behaviors are very hard to give up. So what I was trying to do is, no matter if that secondary behavior is hard to give, I try to voluntarily consciously do that secondary behavior. Like I'm choosing to do that secondary behavior, like consciously. uh, if I fear speaking the word, for example, if I fear speaking the word andheri, so I always have this involuntary behavior of saying like I I sort of speak multiple times before saying the word andheri. So what I'm trying to do is I'm trying to consciously say like you don't have to give up entirely the secondary behavior. What you can do is you can consciously do what all those things that you are involuntarily doing. Like you can increase the frequency of saying you can decrease the frequency of saying so like you can play with the secondaries, uh, that what I was trying to say. Like you don't have to completely give up the secondary. You can sort of be conscious and play with the secondary behaviors that you
that that you feel like you need to change? Okay, I got it. Yeah, so Dhruv, anything that you would like to share? No, no. I like talked a lot already. So anybody else wants to share, then you can share. Um, yes. Okay. तो ध्रुव मेरा एक डाउट था। जैसे मेरा ब्लॉकेज ऐसा होता है कि मैं जब भी किसी वर्ड में ब्लॉक करती हूँ, मैं शांत हो जाती हूँ, मेरा मुझे फंबल नहीं होता है, और मैं अंदर ही अंदर जूझती हूँ कि वो वर्ड मेरा कैसे भी निकालूं। तो मैं वॉलंटरी एंड जो टेक्निक्स है उनको सही से यूज कर लेती हूँ, पर कहीं कहीं बहुत ज्यादा जो टेंस सिचुएशंस हो जाती हैं वहां पर टेक्निक्स काम में नहीं आती हैं और मैं उनको फॉलो नहीं कर पाती हूँ। तो वहां कैसे मैं इनको सही से फॉलो करूँ और टेक्निक का यूज करके वर्ड को रिलीज कर पाऊँ। सही है। तो आई मीन तो एक्चुअली दो चीज हो रहे एंड मेरे मेरे हिसाब से जो जो चीज हम पहले काम कर सकते हैं कि हम तो आप कह रहे कि किसी किसी सिचुएशंस में बहुत लाइक ज्यादा होता है या उस सिचुएशंस में डिफिकल्टी है टू यूज द टेक्निक्स। जी 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 जी, जैसे मेरा अभी प्रेजेंटेशन था ऑफिस में, तो हम्म। उसमें उसके पहले मैंने बहुत ज्यादा वो सिचुएशन क्रिएट करके प्रैक्टिस की थी कि जहाँ मुझे प्रॉब्लम होगी तो मैं उसको ऐसे ऐसे हाँ फॉलो करके कर लूंगी। पर जहाँ वो सिचुएशन आई और मैं फिर ब्लॉकेज करी, तो मैंने ट्राई किया कि मैं उस वर्ड को टेक्निक से निकाल पाऊँ, पर वो वर्ड मेरे बाहर ही नहीं आ रहा था। सही है। ये हो सही गया था। तो मुझे वॉवल्स में होती है, तो मुझे आई में प्रॉब्लम हो गई थी। तो है। मैं ऐसा भी नहीं कर पा रही थी और मुंह ही नहीं खुल रहा था मेरा। या ऐसा हो गया था इसलिए। या आई मीन मेरे साथ भी लाइक ऐसे ही होता है। या होता था लाइक इट हैपेंस लेस नाउ। तो जो जो मैंने किया था कि प्रेजेंटेशन के पहले ही मैं डिस्क्लोज करता हूँ कि मैं लाइक दैट आई एम अ पर्सन हु स्टैमर्स, सो यू विल हियर मी repeat words and get stuck on some words. That's my like disclosure script. So in that way, I'm giving myself permission to stammer in the situation, like in the presentation. Um, yeah, and I'm preparing the audience also to listen to my stammering. And I know it can be scary because your office presentation. I'm not sure कि आपने अपने अपने ऑफिस में डिस्क्लोज किया है क्या कि आप हकलाते हो? नहीं नहीं, अभी मैंने डिस्क्लोज तो नहीं किया है क्योंकि मेरा अभी न्यू प्रोजेक्ट है। तो मैं वहां में न्यू न्यू अभी ज्वाइन ही हुई हूँ। सो आई थिंक ये सब बताना तो परफॉर्मेंस में मेरे खराब हो सकता है, इसलिए मैंने अब तक किसी को बताया नहीं है। Got it. So यस it really depends on how you disclose, right? So if you kind of like disclose in the way I did, like I was completely calm to say that, like, by the way, I stammer, so I'm gonna repeat words and get stuck on some words. So it's a completely calm statement, very neutral. You are like no, not apologizing for stammering. You're just sharing the fact that you stammer. And for me also, अच्छा। like I've disclosed in interviews, I've disclosed at work with colleagues, my boss, everything. And they all know that I stammer, and it's yeah, and other
people as well, I'm sure, like we can also share that, in MNCs and stuff, they've all disclosed about stammering, even like people in managerial levels. Um, and because also if we try to hide our stammering, especially in those feared situations, we're going to actually stammer more and have more blocks, or Yes. right? Yes. So the colleagues will, or the people there will already know that we stammer. यस यस उनको पहले से ही पता है कि हाँ हमको कुछ प्रॉब्लम है, पर हम ही नहीं बता पाते उनको कि हाँ एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि हाँ सही में है, ऐसा होता है। Exactly. Okay. I, So I just wanted to, contribute to the answer that Jaya asked. Like I can completely resonate the situations that she's talking about, because I also face like blockages, and I struggle a lot while saying the vowel words, the A, E, I, O, U, where you need to generate a lot of air to say those words. I struggle a lot saying those words, and yeah, she spoke about techniques not working in those situations. Like I myself was in a trap for a very long period of time. Like I used to feel that techniques are something uh, that will uh, uh, techniques are not tools to hide your stammering. Techniques are tools to show your stammering. Like with with within this setting, like I'm speaking with you all within the TISA setting, I'm not trying to hide my stammer, so I can feel my techniques working more efficiently. uh, Whereas compared to in those situations where you call the stress zone situations, uh, I completely feel to hide my stammer. So uh, in those situations, with the underlying feeling of hiding my stammer, how I could expect my techniques working, and how I could expect to speak more freely. Like so very recently I you know uh, I sort of discovered this, that techniques are not things or tools to hide your stammering. Techniques are tools to are more of tools to show your stammering. So whe- whenever you feel that you can show your stammering, like you have to show your stammering within those situations, techniques can work um, to a very great extent. If techniques don't work, then you can stammer the natural way that you always stammer. But techniques are the things which can work when you feel that you want to show your stammering. exactly. So I think the like decision kind of has to be made, Jaya, about do you want, I mean, like if you know that the more you hide your stammering, the more like struggle you're going to have with your stammering. यस ध्रुव, मीन्स ये है कि अभी भी सही से एक्सेप्टेंस नहीं आई है, तो तभी मैं इतना स्ट्रगल कर रही हूँ। अगर वो आ जाती तो मैं इतना नहीं करती और ऑफिस में भी बता देती, आई थिंक। सो एक्सेप्टेंस ये की है। सही है। एंड एक्सेप्टेंस भी एक प्रोसेस है, लाइक एक एक कदम से लाइक नहीं आएगा, लाइक मोक्ष वगैरह, लाइक इट्स गोना बी, यार yeah. बिल्कुल बिल्कुल। So like for example, यस with like a close friend at work, you can like just casually say, but like, but by the, or like have a conversation with them about stammering. Like, have you like noticed that I stammer? Just ask that, see what they say. So kind of like have an open conversation about stammering with somebody like who you're close to, and then slowly you can kind of open up about it. Um, या बिल्कुल बिल्कुल। yeah, वैसे मैं अपनी फ्रेंड से तो बात करती हूँ, फ्रेंड से एंड फैमिली मेंबर से, पर जो मेरे कलीग्स होते हैं उनसे मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अपना स्टैमरिंग ना शो करूँ, yeah, ऐसा मैं शो करती हूँ। yeah, क्योंकि आई थिंक
उनको पता होगा तो आई थिंक वो मेरी कमजोरी का फायदा उठाएंगे कि हाँ ये ऐसा ऐसे बोलती है, और परफॉर्मेंस में भी फिर इफेक्ट पड़ता है, इसलिए। True. But no, पर yeah. आई थिंक ये सही नहीं है, मुझे उनको। हाँ, यस बोलिए। No, that's no. So आप like yeah, आप continue कर सकते हैं. सो आई थिंक ये सही नहीं है, मुझे एक्सेप्टेंस ही करना पड़ेगा और उनको म- बताना पड़ेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ऐसा है, और मैं ऐसे ही बात करती हूँ, ऐसा। Yeah. Because in some ways like the only way the only way out is yeah, is showing it. Uh yeah. Okay, we'll try to do this also. And I have one doubt also. जो स्टैमरिंग इंटरव्यू है उसका वीडियो ही बनाना है कि मैं ऑडियो में भी उसको रिकॉर्ड कर सकती हूँ? और ऑडियो भी ठीक है. ऑडियो बिल्कुल ठीक है. Um, yeah, Okay, and okay. eventually, if you want, you can make a video. But to begin with, of course, it's fine. Um, and one more thing, like I'll share as well. Like for me in presentations, what 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 I've kind of done in the past is on the words that I know that. Okay, fine. Sorry. So I'll say this. Like if I know that in that situation, I'm going to want to hide my stammering, right? Because it's a situation where I don't want to show stammering. I also know then because I want to hide my stammering, I'm going to stammer more, right? So what I've learned is now that what I do in the very beginning of the presentation is I show voluntary stammering or I do voluntary stammering. And then Okay. uh, and then voluntary stammering is in my control because I'm now doing like basically what I'm doing is I am stammering voluntarily, stammering consciously before I begin stammering unconsciously. So I'm kind of like facing my fear in the beginning because if I keep saying, oh, no, don't stammer, it's obviously going to come. So now if I'm stammering on purpose in the beginning of the presentation, Ani, then it becomes, I'm basically just like, I'm uh, allowing myself to, yeah, to be more open with my communication. Yeah. Yes, yes, got it. Yeah, I know it's scary. अब जो नेक्स्ट टाइम होगा तो ट्राई करूंगी, पर टफ होता है कि हम ऐसा वॉलंटरी एंड बाउंसिंग को यूज करें इन प्रेजेंटेशन, पर विल ट्राई. It's true. Okay. Yeah. Okay, thank you so much for your suggestions. Yeah. Thank you so much. All the best and keep sharing, yeah, with your mentor also, your small group there. I'm sure they have more tips and stuff. Yeah, sure. Okay. Thank you. Bye-bye. Okay, thanks guys. Take care. All right. So, Okay, bye. I'll see you soon at the at the Yeah, meeting. yeah. See you soon at the meeting. Okay. Chalo. Bye. Save the chat.